Hello, my dear nursing aspirants. I, Angeline P. Tirki, welcome you all in APT Online Nursing Classes Golden Question Series. Yes, and today the session is from Biochemistry and Nutrition. So, we will be discussing 20 sets of questions in this. Some of the questions are the previous questions, and some are the new questions which are very important for the upcoming exams 2023. Before starting, I would request my nursing aspirants to do subscribe our APT online nursing classes. So moving on with the first question. Question number 1. Prevention of Food Adulteration Act was initiated in the year. Yes, Food Adulteration Act कब initiate हुआ था? So the answer for this question is 1954. Yes, in 1954 this act was basically initiated and ये Food Adulteration Act क्या है? Food Adulteration Act provides the protection from the adulteration, that is the contamination of food that can lead to the health risk of the consumer. तो health risk consumers का protect करने के लिए this act of food adulteration was initiated and it was initiated in the year 1954. The second question says the best way of increasing the nutritive value of the pulses is. Yes, how we can increase the nutritive value of the pulses? The question says this, and this question was asked in AIIMS Bhubaneswar nursing officer exam. And the answer for this is germination. Yes, by germination we can increase the nutritive value of pulses. Basically जर्मिनेशन के जब हम जर्मिनेशन करते हैं पल्सेस को तो पल्सेस में क्या होता है, इट इंक्रीजेस द प्रोटीन एंड स्टार्च डाइजेस्टिबिलिटी एंड विटामिन कंटेंट एंड ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड को और इंक्रीज करता है न्यूट्रिटिव वैल्यू को. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू इन द पल्सेस. Question number 3 says the best way to retain nutrients while cooking vegetables is. Yes, ऐसा कौन सा वे है जिससे कि हम nutrients जो cooking vegetables में जो nutrients है उसको हम retain कर सकते हैं. So अगर हम options देखते हैं, so the first option says wash and peel vegetables. Second option says avoid soaking in water, drain water after cooking and use shortest cooking time. इन सब में the best answer is the best way to retain nutrients while cooking vegetable is wash and peel the vegetables. Yes, we have to wash the vegetables very thoroughly because by washing we can decontaminate it, and once our vegetable is clean we should peel it and then we should cook it, and cooking should also be done in an optimum temperature so that it can retain the nutritive value of that vegetables. So the answer for this question is wash and peel the vegetables. Fourth question says highest energy yielding food energy is. Yes, highest energy yielding food energy is, and this question was asked in Sarvdarjung nursing officer exam, and the answer for this question is fat. Fat is the highest energy yielding food energy. Basically fat has 9 calorie per gram. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, so carbohydrate has a 4 calorie per gram and protein has also 4 calorie per gram. So fat contains most amount or highest amount of energy, that is your 9 calories per gram. So the answer is the highest energy yielding food energy is fat. The fifth question says normal urine contains all the following except. Yes, normal urine contains all the following except. So in the normal urine, basically normal urine composed of 95% of water and rest of it is urea, creatinine, uric acid, chloride, sodium, potassium, sulfate, ammonium, phosphate and other irons. But the abnormal constituents of the urine is glucose, blood sugar, blood cells and the albumin. अगर urine में अगर there is a presence of blood cells or there is a presence of albumin or glucose, it reflects that there is a
any pathological condition. The patient is suffering from any sort of pathological condition, that can be albuminuria, glycosuria or hematuria. So normal urine mein you can be getting 95% of water, and the rest is urea, creatinine, bicarbonate, ethyl sulfate, all of things we will be getting. But glucose agar hamari urine mein, if there is a presence of glucose, then it is indicating that a patient is suffering from any sort of pathological condition. So the normal urine contain all of the things except the glucose. So answer is glucose. Question number 6 says the average water loss in the urine is. Yes, the average water loss in the urine. In the previous slide, we have seen the urine constituents or urine components. So we have seen that 95% of water is present in the urine. So for answer for this question is the average water loss in the urine is 1500 ml. Yes, 1500 ml water loss is present in the urine. Question number 7, the extra amount of calories required during pregnancy. Yes, how much amount of extra calories is needed during the pregnancy? So the answer is 300 kilocalorie. Yes, 300 kilocalorie is an extra amount of calorie which is required during the pregnancy by a pregnant mother. Question number 8 is question number 8, and this question was asked for. Yes, and this question was asked in 2018 exam, and even in the 2018 exam it was asked, and even in the NORCET exam. So the question is NORCET exam was held, and this question was asked for. Yes, IARI stands for. Yes, answer is I stands for Indian, A stands for agriculture, R stands for research, and I stands for institute. It's an Indian Agricultural Research Institute. Basically, Indian Agricultural Research Institute is also known as a PUSA Institute. So the full form is this. And it is one of the Indian National Institute of Agricultural Research, Education and Extension. And basically this PUSA Institute is derived from the fact that institute was located in the PUSA, that is a Bihar. It is a PUSA is one of the place in the Bihar. So from that name, it is the Indian Agricultural Research Institute is also known as a PUSA. And basically this Indian Agriculture Research Institute was formed in 1919, and it was formed in 1919, and then it was reallocated in Delhi again in 1936. So basically the current institute is in Delhi, and it is financed and administered by an Indian Council of Agriculture and Research Center. And basically this IARI was responsible for the research lending to the Green Revolution in India in 1970. So this Indian Agriculture Research Institute was involved in the research leading with the research was on a green revolution in the India, which was conducted in the year 1970. So the location of Indian Agricultural Research Institute is in Delhi. Earlier it was in Pusa, that is a place which is found in Bihar, and it was formed in 1905 in 1st April. 1st April 1905 में IARI, that is Indian Agricultural Research Institute का उद्घाटन हुआ. And it was earlier it was placed in Pusa, Bihar, and now it is reallocated in Delhi. And the director of this institute is Ashok Kumar Singh. Yes, the director of recent director of Indian Agriculture Research Institute is Ashok Kumar Singh. Now the question number 9 says adult basal metabolic rate decreases with an increase in. Yes, I will repeat. Adult basal metabolic rate decreases with an increase in. Yes, as the body fat. Yes, as the body fat increases, it decreases the basal metabolic rate of an adult. So this question was asked in AIIMS Bhubaneswar Senior Nursing Officer exam, which was held in 2019. And so the answer for this question is, again I will repeat, it's a body fat. When a body fat is when body fat increases, it automatically decreases the basal metabolic rate of the adult.
Now, question number 10. This question was asked in AIMS Raipur Nursing Officer Exam 2019. Yes, again I will repeat. This was asked in AIMS Raipur Nursing Officer 2019 exam, and the question says all of the following are a good sources of vitamin A except. Yes, all the things whatever it is given in option are the good sources of vitamin, but in this only there is a one which is not a good source. So the answer for this is white potatoes. Yes, white potatoes, it is not a good source of vitamin A. Now, question number 11. It was asked in AIMS Raipur Nursing Officer Exam 2019, and the question says absorption of dietary iron is enhanced by. Yes, how we can enhance the iron by intaking it in a dietary habits. So the answer is vitamin C. Yes, by using a vitamin C. Vitamin C absorption of dietary iron is enhanced. Dietary iron is enhanced by the absorption of vitamin C. If we are intaking a vitamin C in a good amount in our dietary habits, it can enhance the iron. And once the iron is enhanced, the hemoglobin is maintained in our body, and we are having a good amount of hemoglobin. Question number 12 says, in sickle cell anemia, glutamine in a beta chain is replaced by. Yes, in sickle cell anemia, glutamine in beta chain is replaced by. Yes, glutamine is replaced by valine. Yes, by valine it is replaced in a beta chain. Beta chain में क्या होता है? Glutamine जो होता है, valine जो compound है, उससे क्या होता है? Change हो जाता है. It is replaced in it, and it occurs in the condition known as a sickle cell anemia. Again, I will repeat. In sickle cell anemia, glutamine is replaced by valine. Yes, by valine it is replaced in a beta chain, and it is present in the condition known as a sickle cell anemia. Now, question number 13 says protein factory in human cells is. Yes, what is the protein factory in human cell? So the answer is ribosome. Yes, ribosome is the protein factory in the human cell. Now the next question is suicidal bag of cell is known as. Yes, suicidal bag of cell is known as. The answer is lysosome. Yes, lysosome is known as a suicidal bag because lysosomes क्या होते हैं? ये एक cellular organelles होती है which contains a digestive enzymes, and ये जो digestive enzymes होते हैं it breaks down the waste material, foreign material and cellular debris. So lysosomes are capable of digesting nucleic acid, polysaccharides, fats and protein. Along with them, lysosomes also digest or damage its own cell by its own enzyme. Actually क्या होता है कि lysosome जो है एक cellular organelles है which contains, ये अपने अंदर एक digestive enzymes को contain करती है जिसकी वजह से ये जो digestive enzymes होते हैं ये break down करते हैं जितने भी waste materials है या कोई भी foreign material हमारी body में enter किया है या सेल्यूलर डेब्रिस अगर कोई ऐसा है तो उन सारी चीजों को ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ इट ऑल्सो ये क्या करते हैं? इनका जो खुद का इंजाइम की वजह से कई बार क्या होता है जो लाइसोसोम्स होते हैं ये डैमेज करते हैं अपने खुद के सेल्स और इंजाइम्स को भी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है. हेंस ये जो प्रोसेस है जिसमें कि लाइसोसोम्स अपनी इंजाइम्स के थ्रू खुद के सेल्स को डैमेज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलिसिस. Yes, it is known as the autolysis, and इसीलिए इस सेल लाइसोसोम्स को suicidal bag भी कहा गया है. Okay, so suicidal bags of the cell is known as the lysosomes, and the main reason is lysosomes produces as cellular digestive enzymes, and many times this digestive enzymes damages its own cell. It is responsible for damaging its own cell, and due to it is known as the process is known as the autolysis, and hence the lysosomes is known as a suicidal bag. Now, 15th question says, produced form of energy is. Yes, what is the produced form of energy? The answer is ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. Yes, adenosine triphosphate is the ATP, and ATP is the produced form of energy. Actually क्या होता है? Adenosine triphosphate, it is a source of energy which is used and stored at the cellular level. बेसिकली ये जो ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी
एंड इट इज यूज्ड एंड स्टोर्ड, कहाँ ये यूज होता है और स्टोर होता है, ये सेल्यूलर लेवल में स्टोर एंड यूज होता है, इसका स्टोरेज एंड यूज होता है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देन एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड, इसके स्ट्रक्चर में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड इट कंटेन्स द एडिनो नाइट्रोजनस बेस। यस, एटीपी में हमेशा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एडेनिन। ओके, एंड दिस एडेनिन इज नथिंग बट इट इज अ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस का बेस होता है जिसको एडेनिन बोलते हैं, एंड अ राइबोसोम एंड सुगर। सो एटीपी कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, सुगर एंड एडेनिन, एंड ये सारे मिल करके दे फॉर्म अ ग्रुप विच इज नोन एज अ फॉस्फेट ग्रुप। सो एटीपी इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग, it is an energy produced form. Okay, ATP, and ATP is a source of energy which is used and stored at the cellular level. Now next question is question number 16. It says mitosis is a condition of, yes, what is mitosis? So the answer is cell division and without reduction. Yes, mitosis is a condition where there is a cell division but there is no reduction. Basically mitosis is a type of cell division in which one cell, the mother cell which is known as, divides in and produce two new cells, the daughter cell. मतलब mitosis क्या है, एक division process है, एक reproductive process है, जिसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जिसमें कि एक मदर सेल होती है, वो डिवाइड होकर प्रोड्यूस क्या करती है, दो सेल्स को, टू न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है, विच इज नोन एज अ डॉटर सेल्स। एंड दैट और ये जो दो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, ये एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं। जो माइटोसिस होती है इट इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू टू इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्या होगा, जो डीएनए है, सेल्स का जो डीएनए है न्यूक्लियस, वो स्प्लिट होता है दो पार्ट में, दो इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में, एंड यही दोनों, ये क्या कहलाएगा, टू न्यू डॉटर सेल्स, और एंड दिस डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। सो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बट इसमें क्या होता है, देयर इज अ नो रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक से दो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो वी कैन से माइटोसिस क्या है, विदाउट रिडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ सेल का डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है। Now the next question is question number 17. It states that storage house of iron in cell is, yes, what is the storage house of iron in the cell? So the storage house of iron is reticuloendothelial system. Yes, it is reticuloendothelial system is the storage house of iron. Yes, ये एक storage house है iron का, basically in the cell. Now the 18th question says memory cells are formed from. Yes, memory cells कौन से सेल से बनता है, so it is made up of lymphocytes. Yes, the answer is memory cells are formed from lymphocyte. Basically T lymphocytes के formation से क्या होता है, memory cells are formed. Basically sensitization with antigen in a secondary lymphoid organ causes T lymphocyte to proliferate by dividing and differentiating into different types of cells based on the situation. Functionally, T cells can be classified into regulator cells and the effector cells. All T cells are able to produce memory T cells. ये जो T cells है ना, ये एक्चुअली में क्या काम करते हैं, ये T lymphocytes जो है ये proliferate होते हैं एंड डिवाइड करते हैं और फिर बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बढ़ जाते हैं डिवाइड होकर के, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन इज, उस अकॉर्डिंगली ये T lymphocytes दे एक्ट and they divide. So T lymphocytes क्या होते हैं, they are इसमें से एक क्या है, जो T lymphocytes में ही ये एक जो है T lymphocytes में कि इनका काम है कि ये रेगुलेटर का काम भी करते हैं और इफेक्टर सेल्स का भी काम करते हैं। एंड जितने भी T lymphocytes है, either it is a regulator cells or it is a effector cells, ये जितने T cells हैं ये
प्रोड्यूस मेमोरी टी सेल्स को भी करते हैं। एंड जो भी सेल्स रिमेनिंग रहते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज में एंड रिकॉग्नाइजेस ये रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन को और पैथोजन को। मतलब बहुत सालों के बाद भी अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी है एंड योर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज को ये क्या करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स है ये रिकॉग्नाइज करने का भी काम करते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स ही है जो प्रोड्यूस करते हैं मेमोरी टी सेल्स को। सो लिम्फोसाइट्स आर द मेमोरीज, लिम्फोसाइट्स के थ्रू ही क्या होता है, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड। Now the 19th question says diffusion through cell membrane does not depend on. Yes, diffusion through cell membrane does not depends on, and the answer is it does not depend on the kinetic energy of the particle. Yes, जो diffusion है it does not depends on the kinetic energy, because क्या है कि जो diffusion है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मूवमेंट होती है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब रोल ही नहीं है। सो वी कैन से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अदर ऑप्शन इफ वी कैन सी चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज देयर, ठीक है, देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन में ऑल द थ्री थिंग्स it can depend upon it, but it doesn't depend upon the kinetic energy of the particle, because diffusion is the process where there is a movement of the molecules from the higher concentration towards the lower concentration, okay. And basically there means if there is a movement, whenever there is a movement in the diffusion process, it is done in a random movement process. There is a random movement of the molecules without any use of any sort of energy. Okay, so this question was asked in AIM Bhopal and in nursing officer exam 2018. So it can be repeated. So we should know that what is diffusion. Diffusion एक आपका प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें दे कैन बी द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दे कैन बी द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दे कैन बी द साइज, मींस इट कैन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल also, but it doesn't depend upon the kinetic energy. There is a no role of the kinetic energy. Here kinetic energy of the particle is having no role. So diffusion doesn't depend on the kinetic energy of the particle. Now question number 21 says pentose phosphate pathway produces. Yes, pentose phosphate pathway, ये basically it is also known as a phosphogluconate pathway. Okay, so this pentose phosphate pathway is also known as a phosphogluconate pathway and hexose monophosphate shunt के नाम से भी जाना जाता है। Basically this is a pentose phosphate pathway. It is, ये एक metabolic pathway होता है which is parallel to glycolysis. Okay, और ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है NADPH. yes, NADPH and pentose, that is a 5 कार्बन सुगर को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है एंड ये क्या है, ये जनरेट करता है NADPH को एंड 5 कार्बन शुगर को, दैट इज योर पेंटोज, एज वेल एज ये राइबोज 5 फॉस्फेट को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये पाथवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका है इन दी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, जो पहला ऑक्सीडेटिव फेज होता है इस पाथवे में, उस टाइम में क्या होता है, NADPH क्या होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और जो सेकेंड पाथवे है उसमें नॉन ऑक्सीडेटिव जो सिंथेसिस होगा जिसमें 5 पेंटोज सुगर का जो 5 कार्बन शुगर है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, मींस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में अगर whenever the question comes, you should know that pentose phosphate pathway is a metabolic pathway. In that in this क्या होता है कि there will be two things, it will be generating two things. First, in first oxidative pathway it will be producing NADPH, and in second pathway, that is the non-oxidative pathway, it will be producing pentose, that is a 5 carbon sugar. Okay, so the pentose phosphate pathway produces what, NADPH, and this NADPH, I will again repeat, it is produced during the oxidative phase. Okay.
Now there is 22nd question. It says G6PD. Yes, G6PD, there is a short form, and it says what does it stand for? We have to enumerate it. So basically G6 PD is glucose 6 phosphate dehydrogenase. Yes, it is glucose 6 phosphate dehydrogenase. Basically ये क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टेप इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अभी हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा था, है ना? तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ये क्या है? G6PD जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है. एंड ये केमिकल रिएक्शन, ये एक सीरीज है केमिकल रिएक्शन का जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अनदर शुगर में. ठीक है, दैट इज योर राइबोस 5 फॉस्फेट. ये क्या करता है? अगेन आई विल रिपीट, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? ये बेसिकली इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन दी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. एंड ये क्या कर रहा है? ये एक सीरीज है केमिकल रिएक्शन का जिसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अदर फॉर्म ऑफ शुगर. Now the 23rd question says the most important buffer in the extracellular fluid is. Yes, most important buffer in extracellular fluid is the answer is bicarbonate. Yes, ये bicarbonate buffer जो होता है, it is a significant buffer of blood and ECF which helps to neutralize effectively hydrogen ion and produce in plasma and ECF. Actually क्या होता है? This bicarbonate buffer जो होता है ये एक extracellular बफर है. एंड बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये एक इम्पॉर्टेंट बफर है जिसका काम क्या होता है? ये ब्लड और ECF को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. बेसिकली ये क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है जो हाइड्रोजन आयंस है उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और ये प्रोड्यूस करता है जो आपके प्लाज्मा और ECF में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करेगा. एंड इसका यही काम होता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोजन आयन को जो कि आपके प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज बाइकार्बोनेट. Now the next question is question number 24. Deficiency of vitamin A leads to. Yes, it's very easy question. Deficiency of vitamin A leads to rickets. Yes, it leads to rickets. Now last question, that is 25th. Beriberi is due to the deficiency of. Yes, beriberi is due to the deficiency of. Yes, it is, the answer is it is due to the deficiency of thiamine. Yes, thiamine की deficiency से क्या होता है? There is a beriberi. Beriberi disease is caused in the person due to the deficiency of thiamine. My dear nursing aspirants, if you haven't subscribed our channel, do like, share and subscribe APT online nursing classes. Thank you.